अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। आज हम जो 9th चैप्टर का सेकंड पार्ट करने लगे, टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल। तो टक्कर का जो 5 क्वेश्चन मॉडल है वो भी एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है, और ये ग्राहम टक्कर ने समझने भी 1990 में ये जो अपना मॉडल मैंने पेश किया था, जो कि बाद में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन अब तक अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर एथिकल डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन भी है, तो उसको बस हैंडल करने के लिए 2 ही ये इसमें मॉडल लगेंगे आपके। एक जो कल पढ़ा था और एक आज ये टक्कर वाला मॉडल है। ग्राहम टक्कर in Agenda for Action Conference of the Canadian Centre for Ethics and Corporate Policy held in 1990 presented a 5 question model against which ethical decisions can be tested. The objective of the test is to identify best possible choices to make for the shareholders as well as the other stakeholders. तो shareholders के लिए और stakeholders के लिए कौन सी possible choices मौजूद हैं किसी भी organization के लिए कि वो बनाएं। Tucker suggests that these questions are to be responded in following order to assess the value shown against each other. कि अगर आपने मार्केट वैल्यू को देख कर कोई, अगर आपके साथ डिसीजन मेकिंग का कोई इशू आ रहा है, इज इट प्रॉफिटेबल, तो ये यानी क्वेश्चंस की जरूर आपने आंसर देने मार्केट वैल्यू के सेंस के अंदर। तो इज इट लीगल, लीगल वैल्यूज के तहत इसे देखेंगे आप। इज इट फेयर, सोशल वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम इसे। इज इट राइट, ये पर्सनल वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। इज़ इट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसे हम इन्वायरमेंट वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बेसिकली जो 5 क्वेश्चन उसके हैं, इज़ इट प्रॉफिटेबल, इज़ इट लीगल, इज़ इट फेयर, इज़ इट राइट, इज़ इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनके अंदर हमने बेसिकली मार्केट वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखना है, लीगल वैल्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को, पर्सनल वैल्यूज़ को और इन्वायरमेंट वैल्यूज़ को अपने मद्देनज़र रखना है। जनरली इट हैपन्स that for a problem we immediately think of an obvious course of action that comes first in our mind, which is termed as the first order thinking. The model leads us to the creative problem solving that involves second order thinking. In second order thinking, we think the facts and reframe the problem and create the more than one course of action. ठीक है जी, तो करना इसको किस तरीके से हैंडल है कि इमीडिएटली हमने इनका मार्केट वैल्यूज का फर्स्ट ऑब्वियस जो हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन आएगा ना, क्या होगा, तो वो हमें समझ ले कि फर्स्ट थिंग माइंड में आएगा, तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं और उसे हम इस्तेमाल करेंगे। फिर मॉडल जो ये हमें है, ये हमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाएगा सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में। द सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में क्या करेंगे, वी रीथिंक द फैक्ट्स और रीफ्रेम द प्रॉब्लम एंड क्रिएट द मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन। सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन एक नहीं, एक से ज़्यादा हम जो है ना कोर्स ऑफ एक्शन को इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद है, किस तरीके से हम इसको बेटा हैंडल कर सकते हैं। वैल्यू जजमेंट से क्या मुराद है? टक्कर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट एंड प्रोवाइड्स एन एथिकल एनालिसिस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वैल्यूज। दिस वैल्यूज एनालिसिस हेल्प अस टू मेक अ बैलेंस्ड डिसीजन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। The Tucker model may be explained by understanding the following 2 approaches. Endpoint ethics में देखेंगे और रूल एथिक्स, इन 2 को देखेंगे तो फिर हमें जो ना वैल्यू जजमेंट जो टक्कर बता रहा है बेटा, इसके बारे में हमें पता चलेगा। यूटिलिटेरियनिज्म है, और जिसे हम एंड पॉइंट एथिक्स कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को। जॉन स्टुअर्ट मिल said that to determine whether an action is right or wrong, one must reconcentrate on its likely consequences, the end point, the end result, कि उसका नतीजा क्या है। एक्शन को ना देखो कि एक्शन वो राइट है या एक्शन रॉन्ग है, उसके नतीजे को देखो कि उसका नतीजा क्या निकलता है, एंड पॉइंट क्या है, कि जो कि बेसिकली इसको हम एंड पॉइंट एथिक्स भी कहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। थ्रू द यूटिलिटेरियनिज्म, इसको मकसद ये स्कूल ऑफ थॉट है, और एंड पॉइंट एथिक्स, वन सीक्स द ग्रेटेस्ट बेनिफिट for the greatest benefit for the greatest number of stakeholders. The obvious requires some compromises for certain segments of stakeholders. As a matter of fact, the course of action selected results in a greater good if taken in aggregate of all key stakeholders. The first question of the model is directed to see the problem in the context of utility
of the decision before analyzing it on ground rules and ethical principles. For example, क्या कह रहा है, यानी कि इसको if you look at the business problem from the perspective of each of the 5 boxes in the chart above, you might generate some creative alternatives which might not come to the mind if only the corporate box is considered. It will take courage for every business enterprise to make the ethical shift for sustainable future, but some can and are leading the way. ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड करेज. ठीक है, उसमें नुकसान होगा, लाजमी बात है कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो वो हमें नुकसान अपना नज़र आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बेटा इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम यानी ये एंड पॉइंट एथिक्स की बात करो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें. जब भी कोई आपने एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म. व्हेन यू थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म, फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है. अच्छा, दूसरा है अप्रोच जिसे हम कहते हैं रूल एथिक्स की. व्हाट इज द रूल एथिक्स? बेसिकली द रूल एथिक्स इंटेंड टू फॉलो द ड्यूटी एंड नॉर्म्स रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम. द इंटेंटेड डिसीजन इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ द लैंड. कानून क्या कहता है? कंपनीज स्टेटेड पॉलिसीज आर एनी प्रोफेशनल कोड एप्लीकेबल ऑन द मैटर. कंपनी की पॉलिसी क्या है, या अगर कोई अकाउंट्स के बारे में तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, तो उसकी नज़र में इसे देखने पड़ेगा. इट अपीयर्स ईजियर टू सी द डिसीजन एज राइट और रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लीगल वैल्यू, बट ऑल लीगली राइट डिसीजंस मे नॉट प्रोड्यूस द सोशल, पर्सनल वैल्यू और एथिकल डिसीजंस. Therefore, the analysis is extended to the moral principles and virtues to have an all-inclusive analysis. Example कह रहा है, ये सेफ स्टोर्स लिमिटेड की दे रहा है. मैं सेफ स्टोर लिमिटेड कंपनी engaged in providing wide range storage services to other companies. 2 years ago, SL rented a property for 10 years in a small city, which is surrounded by agricultural land. It built a warehouse having humidity, light and temperature control systems. It also had some sterilized sections to store fresh pulps of fruits. This storage facility significantly helped the villagers to store and preserve they produce. ठीक है, जब यानी कि क्या जो भी उसने किया उसका विलेज वालों को उसका बेनिफिट हो रहा है. Recently, the local court took notice of unauthorized use of the municipal plots of land in the city and issued an order to the authorities to demolish all unauthorized constructions and recover the land. SL, though a 30-day demolition notice received at the storage facility. अब वो storage facility के उसे 30 दिन का notice मिल गया जो कि illegal थी. Discovered that the property they rented out was illegally constructed over the plot of a land originally allotted by the government for the construction of a school. The owner of the property built a small school on about 30% of the land, and on the rest of the land built a bulk store structure. SL storage facility was built in the said structure. ठीक है, किसी को स्कूल बनाने की इजाज़त दी गई, उसने 30% में स्कूल बना दिया, बाकी के ऊपर वो बिल्डिंग बना के वो रेंट आउट कर दिया SL को. The demolition notice shocked the management of SL, as demolition in 30 days can cause a substantial loss of a business, cost of damages to clients, and cost of shifting and reconstruction. You as a CFO or SL informed the CEO that in order to minimize the expected losses, SL needs to lease 1 year to property plan, reconstruction and shifting. On the instruction of CEO, you met with the lawyer and discussed the way out. Lawyer reviewed the facts of the case and concluded that this is a lost case for the owner of the property, whereas SL as a tenant may become an aggrieved party and can file an appeal for 1 year notice time. However, he was of the opinion that court is likely to issue a stay order in its first hearing, but will conclude the case within 1 month. It is also likely that the court would not allow more than 3 months. He proposed some strategies that can possibly delay the conclusion of the case and resultantly demolition for 6 months. You noticed that these strategies include adjournment request for false medical grounds,
Exaggeration of cost of damage to the clients and showing overestimated time and cost for shifting and reconstruction. You are preparing your recommendations for CEO on lawyer's advice. ठीक है, अब देखें कि आपने CEO की बिहाफ के ऊपर, CEO के लिए लायर्स की एडवाइस के ऊपर आपने ये प्रिपेयर करना प्लान कि किस तरीके से हम इसको करेंगे. तो वो लाजमी बात है कि देखिए एथिकल डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, झूठ कितना बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. तो एप्लीकेशन क्या होगा टकर्स मॉडल. यूज टकर्स 5 क्वेश्चन टू एनालाइज लॉयर्स एडवाइस फॉर रिकमेंडेशन टू द CEO. इज फॉलोइंग द लॉयर्स एडवाइस प्रॉफिटेबल. कि अगर हम लॉयर की एडवाइस को फॉलो करते हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है. इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी इफ इट कुड डिले डेमोलिशन फॉर 6 months. Number 2, it is profitable for the villagers as they will have 6 months to preserve their produce in the storage and subsequently use the plant new facility. It will delay the possibility of expansion in a school which is not profitable for the society. ठीक है, तो सोसाइटी को इसका नुकसान हो रहा है कि स्कूल डिले होगा. लाजिम बात है बाकी 70% के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन स्कूल ही की होगी ना. इज द फॉलोइंग लॉयर्स एडवाइस लीगल. अभी जो लॉ ने हमें एडवाइस दी वो लीगल है. ट्राइंग टू गेन टाइम फॉर शिफ्टिंग में नॉट बी इलीगल दो द स्टोरेज फैसिलिटी इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इलीगल प्रॉपर्टी. प्रेजेंटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन टू द कोर्ट फॉर डिलेइंग हियरिंग इज इलीगल. एग्जैजुरेशन फॉर एस्टिमेट कॉस्ट में नॉट बी क्लियरली इलीगल. अच्छा, तीसरा क्वेश्चन इज फॉलोइंग द लॉयर्स एडवाइस फेयर. ट्राइंग टू गेन टाइम फॉर शिफ्टिंग इज for the tenant is early demolition will be disproportionate burden on tenant. Struggling for extension in notice period is fair with villagers as early demolition will cause disappropriation loss of them when they will have no facility during the construction period of new facility. An extension of 6 months in notice period will be unfair with the youth of the city who can now go to a bigger school if built over the property. Is following the lawyer's advice right? It is not right for you. Being responsible to promote the legitimate objectives of your employer to recommend by any strategy that has any illegal element. Is following the lawyer's advice sustainable? The extension in notice period will prove sustainable for the fruit farms in nearby villages and will encourage farming which is good for environment. ठीक है, अब ये आपने पांचों सवालों का जवाब दे दिया है. ठीक है, तो पांचों सवालों का जवाब मेरा आपसे तो सिर्फ मेरा मकसद कि एक राय मांगी गई थी ना, तो ये आपके सामने बिठा के पांचों का मेरा मकसद कि किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है दूसरे लफ्जों में. अच्छा जी, फिर एक और एग्जांपल आ रही है टक्कर मॉडल की, अर्बन होटल लिमिटेड की. अर्बन होटल लिमिटेड इज द लीडिंग नेम इन द hospitality industry in Pakistan. Urban Hotel recently developed executive suites advertised at 36,000 per night. Unfortunately, even after adequate marketing and high levels of comfort, the new rooms are rarely booked. The management is concerned that the standard rooms are more profitable than the new suites are taking up space and becoming a liability. Therefore, the CEO, being authorized to do so, decides to offer these suites at a reduced rate of 18,000 per night. His decision is communicated to the concerned staff for implementation. However, while completing the extra booking resulting from the reduced rate, the data entry staff erroneously entered the cost 28,000. 18 नहीं, वो भूल गए, उन्होंने 28 गलती से 28,000 कर दिया, which remained unnoticed for 3 days. During these 3 days, 118 nights were booked. The matter was presented to the CEO, who finally decided that. कि उसे बता दिया गया कि 118 नाइट्स में बुक हो चुकी हैं, इतने डेट को 28,000 पे. अच्छा, अब CEO ने फाइनली डिसाइड करना. क्या डिसाइड करना? Promotion stands will be placed at the booking counter showing original reduction price 18,000 without diminishing an effective date. Number 2. In order to avoid possible negative reaction from guests who had booked during the first 3 days and were yet to check out, the error would be corrected with retrospective effect on their bills.
This was applied to 48 out of the total 180 nights booked during the first 3 days. Any guest who had booked and left would not be refunded their excess charges. This was applicable to 70 out of total 180 nights booked during the first 3 days. Any replies by hotel staff to request by customers for clarification on this matter will not mention the issue is in error. ठीक है, अगेन टक्कर का मॉडल लगाएंगे यहाँ पे आप बेटा. आर द डिसीजन ऑफ सीईओ प्रॉफिटेबल? अगेन डिसीजन बी इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द शॉर्ट रन but profitable for the business in the long run, as it will build customer loyalty from those who were refunded. It will be profitable for the guests who were yet to check out. Decision C is profitable for business since it will save the amount that otherwise is refundable to 70 nights, but will not be profitable for the guest who left the property. अच्छा जी, are the decisions for CEO legal? अगला क्वेश्चन, decisions B is legal. Legally a gratuition act of the hotel, as it does not follow the fundamental principle of offer and acceptance under contract law. Decision C is legal, as it is follows the fundamental principle of offer and acceptance in contract law. CEO का decision fair है. Decision B is fair to all the guests who booked during the 3 nights and are yet to check out. C is not fair to the guest who already checked out, as the discrimination applied by the hotel has no grounds except that these guests have left the property before the error could be detected by them. Decision B is fair to the business, as it refunding the amount collected erroneously. Are decision CEO right? The guests who have checked out have a moral right to refund for the excess price they paid compared to what was offered. Are the decisions EU sustainable? The case has no environmental issue. इसका environmental issue नहीं है. तो ये इस तरीके से बेटा आपने ना इन चीज़ों को बेसिकली आपने हैंडल करना है कि वो पांचों वैल्यूज़ को आपने डिस्क्राइब करना है टक्कर मॉडल के ज़रिए से. अब ये कुछ सेल्फ टेस्ट आपके आए हुए हैं. तो माहम belongs to rich family है, and she is the first girl in her family to complete a master's degree from Oxford University. On her return, she visited her grandparents living in her native hometown. दादा के पास गई. She was amazed by the hospitality and was showered with gifts. One particular gift caught her eye, a beautiful hand-woven set of accessories and chadar. The intricate design and masterful strokes winning her heart, she discovered that making hand-woven fabrics and embroidery are common pastime for the women in the village, and they are unaware of the potential value of their products. Maham decided to take a few of the pieces and managed to sell them at a very good price. Inspired by this success, she decided to set up a distribution center to sell the handcrafts made by women in the village to high-end customers. She hired female workers on a daily wages basis that conforms to the minimum wage law and provided them material to produce large quantities of handcrafts. The center was highly successful. She earned huge profits during her first year and decided to expand the business by displaying her products at the International Heritage Fair, the biggest South Asian arts and craft exhibition. Though this exhibition she received several big orders, and now she plans to expand and run it as her main business. While planning for expansion, she decided to hire women at the monthly wage that conforms to the minimum wage law. She knows that for next few years there would not be any competitor and workers would not have any other competitive opportunity. ठीक है जी, मिनिमम वेज पे रखा सार को रिकॉर्ड अप्लाई टक्कर्स मॉडल ऑन द वेज पॉलिसी ऑफ महान एक्सपेंशन प्लान के ऊपर हमने टक्कर मॉडल किसको लगाना है जी, वेज पॉलिसीज के ऊपर हमने इसको लगाना है. चले जी, इसका आंसर क्या है? इज वेज पॉलिसी प्रॉफिटेबल? इट इज प्रॉफिटेबल फॉर महाम एज शी वुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट. इट इज प्रॉफिटेबल फॉर फीमेल वर्कर्स एज इट विल प्रोवाइड देम विद प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट. इज वेज पॉलिसी लीगल?
It will be legal contract as women will be hired with their free will. The daily wages conform to the minimum wage law. Is wage policy fair? It is unfair because Maham is getting undue advantage of workers' weak bargaining position and lack of knowledge of actual worth of their work. Is wage policy right? Wage policy is right in essence. Yes, in a sense, yes, right. Is wage policy sustainable? It is sustainable for the environment because the fabrics and the embroidery are hand woven. ठीक है, तो बेसिकली अब इसका यही आंसर है इसका, ठीक है ना। यानी कि पांचों को आपने देख के उन पांचों को आपने डिटरमाइन करके बेटा इसके जो आंसर को प्लेस कर दिया टक्कर को मॉडल लगा के डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यस गो हेड। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं देखिए ना, मेरा मकसद मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी जब आप देखते हैं, मैकडॉनल्ड्स भी तो बर्गर आपका आज के दौर में 1000 रुपये का बेच रहा है ना, जो कि कास्ट कर रहा है उसको 100 के करीब, या कितने बर्गर शॉप 100, 150, 200 के अंदर बर्गर बेच रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि बेटा जो बिजनेस करता है वो करता तो प्रॉफिट के लिए ना। ठीक है मेरा एम्प्लॉइज़ है, लेकिन एक एम्प्लॉइज़ को रोका तो नहीं, एम्प्लॉय अपनी फ्री विल के साथ आए ना। ठीक है एम्प्लॉइज़ के पास चॉइस नहीं है, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर यही हो रहा है। आखिर तो देखें ना कि आउटसोर्सिंग के लिए कितना काम है जो शिफ्ट हो रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक, वो शिफ्टिंग की वजह से भी जो है काफ़ी काम जो है ना हो रहा होता है। तो ये इसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा होता है। तो वो देखना ये है कि आया ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर आ रहा है कि नहीं, एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और जितने भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे के सारे बेटा उससे जो है ना हैप्पी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। तो इसी को लेके हमने फॉलो करना मॉडल को। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर आ रहा है वो है कि रेहान बुखारी वाज पोस्टेड टू द XYZ रीजन एज a regional manager in order to set up a manufacturing subsidiary. While attempting to set up a new headquarters and manufacturing facility, he is facing delay in approval from the local authorities lasting many months. To resolve the issue, he met 3 senior officials who indicated that setting up the subsidiary would go smoothly in Rehan's company would pay them 20 million as a facilitation payment in addition to the total official charges of 3 lakh rupees. They told him this was a reasonable amount compared to what other companies usually pay them for the same assistance. Rehan was dismayed since he was aware that the bribery was against the company's policies on how to do business and that its violation would not be tolerated under any circumstances. 2 days after the meeting, he receives a call from the CFO that if the delay are not resolved, soon he will be replaced by a more efficient manager. Rehan was approached by a consultant who offered to get the approvals without further delay at the fee of 28 lakh rupees. There is a budget of 30 as a provision for payments to consultant for the legal and the other services. He is now thinking of hiring the consultant. So again, इसके अंदर भी देखना है कि टक्कर का जो मॉडल है ना, हायरिंग कंसल्टेंट्स के लिए हमने लगाना है और देखना है कि टक्कर का मॉडल इसके ऊपर किस तरीके से बेनिफिशियली तौर के ऊपर फिट बैठता है या नहीं, और एथिकल डिसीजन में हमारी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, जो पहला क्वेश्चन होगा, इज हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट प्रॉफिटेबल है? यस फॉर द कंपनी बिकॉज वर्क विल नॉट बी डिलेड फर्दर। इज हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट लीगल? Yes, it is legal to hire a consultant. Number 2, इसके अंदर आप लिख सकते हैं there is a budget available for such appointment. Number 3 question है is hiring of consultant fair? It is not fair with the company to pay such a disproportionate consultant fee. Is hiring of consultant right? It is not right as such a high fee for consultant indicates that the consultant would use unfair means to get the approval. Is hiring of consultant sustainable? This situation does not include any information about the environmental impact है, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर इसका किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसको जो है ना फिर हम इस एंगल से देखेंगे, ये टक्कर का मॉडल लग के फिर आपके सामने इसका जो आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्स के अंदर भी आपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से इसको जो है ना आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, बस तीसरा करते हैं, ज़रा 1 मिनट मुझे दे दें, मैं ज़रा एक दोस्त उनसे ज़रा बात कर लूँ। क्वेश्चन है आपका 3rd है कि यू आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ प्री कॉस्ट कंसल्टेंट लिमिटेड PCL के नाम से दैट
deals in pre-cost structures and use in buildings, bridges and trench covers. PCL has a few medium-term agreements and a pre-qualified steel suppliers. In a board meeting, the PCL committee is presented the case of private company Strong Steel Private Ka Limited SSL, which was pre-qualified in 2013 as a supplier of steel. Recently, an internal audit report identified that a key pre-qualification criteria was not applied in SSL case. SSL case के अंदर वो हमने apply नहीं किया. ठीक है. The procurement committee considered the exemplary contract performance history of SSL, is suggesting a special waiver of the shortcoming for a period of the next 2 years, which the board approves. As a normal course of SSL clients relation strategy, higher management and the directors of PCL regularly receive small gifts such as the family passes for amusement park and entertainment show, diaries and the fruit baskets. Apply the AAA model on the above scenario. अब इसके ऊपर जो हमने AAA मॉडल लगाना है हमारा इस PCL कंपनी के ऊपर बेटा. अब AAA मॉडल आपको पता है कि इसके 7 स्टेप्स हैं. द फैक्ट्स फॉर द केस आर क्या है. फैक्ट नंबर 1 क्या है जी. Internal audit uncovered that a key pre-qualification criteria was not applied in SSL. The board approves the procurement committee suggestion of a special waiver दे दी गई उसको. SSL had an excellent contract performance history. अच्छा, the ethical issues क्या है जी इसमें. By allowing the waiver, the board might be unfair with other suppliers who fulfill the conditions or those who were rejected due to the particular shortcoming. Objectivity of board members and the management might be threatened by familiarity threat due to the frequent client relation techniques used by SSL. The norms, principles, values related to the case are that the board had to make decisions free from bias and should ignore any favors offered by SSL. SSL was given reasonable favor due to its good performance record. Other suppliers were not given a fair chance. Each alternative of course of action क्या होगा. The board allows the waiver. The board does not allow the waiver and go for the rebidding process. अच्छा, मैचिंग नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज को, ऑप्शंस को. उसके अंदर पहला मैच होगा अलोइंग वेवियर कुड नॉट कंप्रोमाइजिंग द फेयरनेस इन डीलिंग. नंबर 2, नॉट अलोइंग वेवियर इज नॉट एक्टिंग विद ड्यू केयर. द एनालिसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ जी. Allowing the waiver sets a tone that the company is flexible towards the policies. This decision may create a domino effect on future decisions that further dilute the company's policies. Rejecting the waiver would mean the board will not compromise on the company's policies. However, it may not be in the interest of the company. So taking decision क्या हुआ. From the above analysis, it appears that the board balanced the consequences against the primary principles and values by selecting the best fit alternative. Best fit alternative के लिए गए. ठीक है, तो उसके लिए इनका जो डिसीजन था वो करेक्ट होगा. ठीक है, तो ये बेटा फिर हम इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं. ये हमारा अब आपके सामने बेटा था चैप्टर नंबर 9 बेसिकली. ठीक है जी. अब चैप्टर नंबर 9 इससे जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर आपके 10 है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यहाँ से लेके अब सब फ्रांस आप जो ना आपकी क्लास लेंगे बेटा वो पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर. मेरा ये जो है 9 चैप्टर का जो एनालिसिस करना हमने बेसिकली लॉन्ग को शॉर्ट के अंदर अगर मैं कट करूँ तो इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस. ठीक है, और हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस था. इसका एनालिसिस का एनालिसिस क्यों किया जाता है. बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कंपनीज, फ्यूचर ऑफ द कंपनीज, फ्यूचर के अंदर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ये सारे के सारे बड़े ही क्रिटिकल किस्म के फैसले डिसीजन होते हैं बेटा, जो कि बगैर प्रॉपर एनालिसिस के, यानी कि जितना हमने ये पढ़ा है ये बेसिकली हमें जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट में प्रॉपर एनालिसिस कंपनी का यही होता है. आगे जो फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेंगे वो फिर इंशाल्लाह आप सर फरहान साहब के देखेंगे, क्योंकि बेसिकली तो फाइनेंशियल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो उन्हीं की वजह से आपने जो भी डिसीजन लेना है कि किस तरीके से आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटा कंट्रोल करना है. अगर ऑर्गेनाइजेशन बेचना चाहते हैं तो फाइनेंशियल आपको क्या कह रहे हैं. ठीक है, और बाइंग के लिए क्या कह रहे हैं.
तो ये इस वजह से जो MFA का सब्जेक्ट है इसके अंदर इन्होंने दोनों मैनेजेरियल एनालिसिस भी डाल दिए और फाइनेंशियल एनालिसिस भी इसके अंदर दोनों डाल दिए बेटा। फाइनेंस भी डाल दिया और मैनेजमेंट का पार्ट भी इसके अंदर डाल दिया कि आप स्ट्रेटेजिकली सोच के समझ के अपने एथिकल डिसीजन को अपने मुकम्मल तौर पे अपने बिहेवियर को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए, पॉलिटिकल्स को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए डिसीजन मेकिंग करें। अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने मार्केट शेयर को देखते हुए, अपनी वीकनेसेस को समझते हुए, कम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हुए, अपने जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए बेटा KPIs बनाने के बाद जो है ना आपने इस एनालिसिस को कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर जो भी जवाब होगा उसके अंदर जब इस तरह की रिपोर्ट आप अपने एज ए कंसल्टेंट बना के बेटा कंपनीज को पेश करते हैं, दिस इज एक्चुअली ये वो पॉइंट होता है बेटा जहाँ पे आप लोगों की एक्चुअल वर्थ जो है ना मार्केट के अंदर बनती है, और उसी वर्थ की बेस के ऊपर फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलते हो, अपनी जाती ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एज ए कंसल्टेंट एक्चुअली मे बी यू स्टार्ट वर्किंग फॉर somebody else, but in a few years time you might decide to start working for yourself कि ये कंसल्टेंट ये मैं खुद भी ये कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं चंद दोस्तों को मिलकर अपना ये कारोबार शुरू कर लूँ। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए और यकीन जानिए कि इसके अंदर अगर बेटा आप लोगों के एक दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंसल्टेंसी फॉर न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू बिजनेस को इसके लिए को आपको हायर कर ले या आपके साथ अटैच कर दें या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दें, आई मीन गोइंग टू बी द ह्यूज अचीवमेंट फॉर यू इन द फ्यूचर, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और हाँ, इसके अंदर कोई इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो बेटा, आई एम देयर ऑलवेज, ठीक है। तो मैं ये टक्कर का मॉडल इसको ज़रा आसान कर ढूंढ के वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ही हमारा जो कोर्स है बेटा, कोर्स से मुराद भी मेरे जो हिस्सा था इसके अंदर आपके MFA का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक बेटा। थैंक यू वेरी मच, बी इन टच इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।